Good evening, everybody. I'm Sayuka from beautiful Spotless Skin team. I'm sure all of you must be keeping good health. You all know proper skin protection is the best thing you can do for the health of your skin today and slow down the effects of aging tomorrow. In today's era, changing weather with excessive heat or humidity increases risk of damage due to UVA and UVB rays, which make skin more prone to wrinkles, melasma, and acne. Acne is caused by a combination of hormones, oil, and bacteria. When oil, dead skin cells, and bacteria clog the follicles, sebum can't escape the pores, and this leads to acne. According to a survey, 67% of people in India are not using sunscreen as a daily skincare routine. Several things about sunscreen that we people are not aware of and that makes us not to include sunscreen as an integral part of skincare routine. So to keep us informed today, we are here to know more about sunscreen and acne. So let's connect today with our skin expert, Dr. Prateek Nagrani, live from Delhi. Dr. Prateek is an upcoming dynamic dermatologist based out of New Delhi. After completing his MBBS from the prestigious Maulana Azad Medical College in Delhi, he went on to pursue his MD in dermatology from Dehradun. He then pursued a fellowship in lasers and aesthetics. He is also an international fellow of the American Academy of Dermatology. Dr. Prateek is actively involved in not only treating but also educating his patients for good skin care. A very warm welcome to you, Dr. Prateek. It's a pleasure to have you with us for this Thank you session. thank you so much, Sayuka, and thank you so much for the kind introduction. So, Dr. As today we are going to talk about sunscreen and acne. Many things are there, as I already said in the introduction part, that keeps us from using sunscreen on a daily, on a regular basis. And the foremost question that we have in our heads is, why should I wear sunscreen every day, throughout the year, throughout my life? Why it's so important? Well, that's a really good question to begin with. We humans, we live in light, whether it is outdoors or it is indoors, and we all want to delay the aging process. I mean, it's inevitable, but we always want to look young. We want to look 40 when we're 50. We want to look 50 when we're 60, so on and so forth. So, photo aging is a very important component. Photo aging is aging because of the light, and it's not only because of the sunlight. It is because of also the indoor lights that are there, specifically the strong focus lights that we are so exposed to in our workplaces, and also at many malls and the showrooms that we go to. Also, now being addicted to phones, there is a blue light that is there that can lead to photo aging, can lead to pigmentation. So a sunscreen that covers all of these, that has good UVA protection, that has good UVB protection, infrared protection, blue light protection, and suits your skin most importantly, is a must, whether you're indoors or you're outdoors. Okay. So even if we are not going out much, or even if we are working from home, or there are housewives who work from home, you're saying that it's important to apply sunscreen every day to protect our skin from the harmful effects of sun rays and the other rays, that are harmful for our skin. Now, doctor, as whenever we go and try buying a sunscreen for us, there is a term, abbreviation rather, which says SPF. And it has various numericals or digits, associated with it, from 15 to 20 to 30 to 40 to 50, 60, 70. Now we all are so confused. We would like to, understand what does this SPF level mean and why we should know about it while choosing sunscreen. Now, I would like to break one myth here, that is that SPF is everything, because I often get patients who speak to me about that I use this SPF sunscreen, I use something which is SPF 80, I use something which is SPF 50 plus. Let me tell you that for the Indian conditions, anything above SPF 30 will do. SPF 30, considering that you're not exposed to the outdoors on a prolonged basis, anything above SPF 30 is good in India, because it tells you the protection factors from only a particular ultraviolet type from the sun. What you also need to look at is the PA rating, which should be at least 3 plus, or the boots rating. Along with that, what you need to see, what one needs to see while buying a sunscreen is, does it suit the kind of skin that they have?
If somebody has a dry skin and you give them a sunscreen which is meant for patients with oily skin, that's going to further dry them out. If somebody has a skin which is prone to acne, you need to give them that kind of a sunscreen. If somebody has a skin who gets itching easily, a rash easily, you need to give them something which is completely fragrance free, paraben free, which is hypoallergenic. So the sunscreen type has to be decided by your dermatologist after evaluating your skin type and your daily regimen. So SPF is not only something which is important. Right. So SPF is one factor, but then there are other factors like the skin type or the condition of, or our daily routine, which determine which sunscreen is good for me. Doctor, as you just mentioned, how to choose the best sunscreen for an individual. We would like you to shed some light over it, how to choose the best sunscreen for us, and, what are the various types of sunscreen, because these days we see a lot of formulations available, gel based, spray based, etc., etc. Please shed some light over that. Yeah. So there are basically two categories of sunscreens. One is physical and one is chemical. Now most of the sunscreen that we have today, they're a combination of these two. But neither of them is preferred outright. As I said, it depends on the situation that you're in. There's no one size fits all. A sunscreen that is meant for somebody who stays outdoors or is a sportsman will be different from somebody who's working from home. They're completely two different paradigms. But if you have so the best judge for that is obviously your dermatologist. But I'll just give you a few examples. Like if somebody has an acne prone skin, what they must look for is that the sunscreen is oil free, the sunscreen is hypoallergenic, and it says non-comedogenic on its label. For kids, say 5 or 6 year old kids, Label. yeah. For kids who are 5 or 6 years old, we do not prefer them to be wearing chemical sunscreens. For them, we want sunscreens which are more physical so that they are not absorbed. They just form a layer over their skin and they can be easily washed off. So the sunscreen would mention it that you can use it for a child who's 1 year old or 2 year old, or there are specific kids sunscreens also which are mainly formulated using the physical barrier components. Then a very precious category of my patients is that of pregnant females. Females get all sorts of skin issues during pregnancy, ranging from melasma to acne. So to choose a sunscreen there becomes a very precarious task because we don't know how the skin will react, and there are still studies ongoing regarding the components which are there in the sunscreen. The physical barriers are obviously the best. That is something containing zinc oxide or titanium dioxide. They're the safest in pregnancy. But in females with acne-prone skin who are pregnant, they can lead to an outbreak of acne. So that is a very thin line that we have to tread to look at various components, assess the skin of the patient, and then decide what would be the best sunscreen for her. The best way, in my opinion, still is if you're outdoors, it is physical protection. I mean, just cover your face with a clean cloth, wear a hat, wear sunglasses. In case a sunscreen does not suit you, these are the best ways. And there are also certain oral sunscreens which are available in the market today. If you feel that it makes you look, it's sticky, you've tried 10 brands of sunscreens. We also have oral sunscreens. Along with physical protection, they can be a very good alternative in people who don't want to apply a cream or a gel or a spray on their face. राइट अच्छी बात यह है कि बहुत अलग अलग फॉर्मुलेशंस में हर स्किन टाइप के हिसाब से, हर वर्क स्केड्यूल के हिसाब से, एक स्विमर है तो उनके लिए, एथलीट है तो उनके लिए, सबके लिए अलग अलग तरह के सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं। और ऐसे में बहुत अच्छा होगा कि हम एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और उनसे समझें कि हमारा स्किन टाइप क्या है और हमारी वर्किंग कंडीशंस को कौन सा सनस्क्रीन सूट करता है। और जैसा कि डॉक्टर बता ही चुके हैं कि बहुत जरूरी है कि हम रोज डेली एसेंशियली सनस्क्रीन
सनस्क्रीन को अपनी स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बनाए, तो ऐसे में और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम एक बार डर्मेट से जाके जान ही लें कि हमारी स्किन कंडीशन के लिए, हमारी स्किन के लिए कौन सा सनस्क्रीन बेस्ट रहेगा. And now, doctor, we also, get to hear this often, that it's just not that you'll apply sunscreen for once and you're done for the day. You need to, reapply sunscreen, and the quantity is also important. So again, how much quantity of sunscreen we need to apply, and how often we need to reapply? That's a very good question. Sunscreen should be applied in a good amount. It is not a spot treatment. It is a treatment for your entire face and your neck at least. Then the hands or any sun exposed part, that is also good area to cover. So I'll just say for the face and the neck, at least one finger length. That is from hair to hair. That is the basic thing. If you can go to 1.5, that is even better. And about the reapplication, every 3 to 4 hours is a must. There are certain sunscreens which claim that they last for 8 hours or 12 hours. If you believe them, that is all right. But that is in ideal conditions if somebody is outdoors and not sweating. If somebody is outdoors, they're sweating, then obviously once you get the sweat, you need to wipe it off and you need to reapply the sunscreen. And one more important thing is that although say you applied a sunscreen, you're sitting indoors for 2 hours, but the conditions indoors are very different from those which are outdoors. So every time that you step out in the sun, 10 minutes before going out, it is advisable that you use a sunscreen. So to break it down, 3 to 4 hours reapplications, that is at least thrice a day. The common schedule being 9 a.m., 12 noon, and 3 p.m., and 10 minutes before going out in the sun. ओके डॉक्टर, सनस्क्रीन से जुड़े हुए एक तो और ऐसे सवाल जो आमतौर पर लोग बहुत पूछते हैं, उसमें से ये खास तौर पर जो फील्ड में काम करते हैं, दे कीप ऑन आस्किंग दिस दैट देयर मे बी आई एम वर्किंग इन अ फील्ड एंड माय वर्क रूटीन इज सच कि बार-बार मुंह धोने का मेरे पास टाइम नहीं है, या अगर 3 बार मुझे अप्लाई करना है सनस्क्रीन तो मैं फेस वॉश नहीं कर सकता, तो क्या मैं बार-बार उसी लेयर पे फिर से रीअप्लाई कर सकता हूँ? एंड अनदर थिंग कि मान लीजिए मुझे थोड़ा बहुत मेकअप भी करना है, तो अब मैं सनस्क्रीन कब लगाऊं? क्या एक ऑर्डर होना चाहिए, सनस्क्रीन कब लगाना चाहिए चेहरे पे? तो इन दो बातों पे भी आपसे हम क्लैरिफिकेशन चाहेंगे. ठीक है. पहला सवाल जो है कि अगर कोई फील्ड में काम कर रहा है, वो कहता है कि मैं बार बार अपना चेहरा नहीं धो सकता, तो ऐसे लोगों के लिए खासकर आजकल एंटी पोल्यूशन सनस्क्रीन आते हैं जो सिर्फ उन्हें सनरेज से नहीं बल्कि पोल्यूशन के एलिमेंट्स से भी बचाते हैं. और अगर वो फील्ड में है और वो बार बार अपना चेहरा नहीं धो सकते, वो टिश्यू रख सकते हैं अपने साथ, चाहे तो वेट वाइप रख सकते हैं या एक ड्राई टिश्यू रख सकते हैं. अगर स्वेट आ रहा है, स्वेट को डैब किया एंड दोबारा से सनस्क्रीन को लगा लिया. हर बार चेहरे धोने की जरूरत नहीं है. दूसरा सवाल आपका ये था कि जो फीमेल्स हैं जो लोग मेकअप यूज करते हैं, अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन ये है कि कुछ टिंटेड सनस्क्रीन आते हैं जिनके अंदर कुछ एक टिंट मिक्स होता है, तो वो आपको एक मेकअप का इफेक्ट देता है. उसको आप अगर हर 3 घंटे नहीं तो 4 से 5 घंटे में आप उसको रिपीट कर सकते हैं. एक बार आप घर से लगा के निकले, फिर जब आपको ऑफिस में लंच ब्रेक हुआ आपने लगा दिया, तो वो सनस्क्रीन का भी काम करेगा और एक लाइट मेकअप जो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं उसका भी काम करेगा. अगर आपको है कि नहीं मुझे मेकअप ही यूज करना है, तो पहले आप अपने सनस्क्रीन को लगाइए और प्रेफरेबली ऐसा सनस्क्रीन चुनिए जिसके अंदर मॉइस्चराइजर जरूर हो ताकि आपका मेकअप क्रैक ना करे. उसके ऊपर फिर आप अपना मेकअप लगाइए. तो ऑलरेडी आपके पास दो लेयर्स हैं, एक सनस्क्रीन का और एक मेकअप का. मेकअप भी एक फिजिकल बैरियर ऑलरेडी प्रोवाइड करता है लाइट के अगेंस्ट, सन के अगेंस्ट. तो वो एक बेहतर तरीका है मेरे ख्याल से, जिन लोगों को मेकअप भी यूज करना, सनस्क्रीन भी यूज करना, दोनों को अलग अलग यूज करना है. Yeah, so you have very well explained, and addressed our questions. Now we'll like to move from sunscreen to the other topic that we are going to discuss today, and that's acne. Again, a very common problem with most of us. So first of all, we would like to know what are the causes of acne? What causes acne? Acne is there's a myth that acne is a disease or it is something which is absolutely normal कि ये तो सबको होगा ही होगा. It is neither of the two. It is in my viewpoint, it is a condition that needs to be managed and managed so well that you do not suffer from the implications which come later on, like pigmentation or scarring. So as you said in the beginning of the video, that when in a layman's language, when the pores get blocked because of sweat,
then that leads to acne. But that happens in everyone, yet not everyone gets acne. So there are certain components. One is your skin type. What amount of oil is your skin producing? In people who produce more oil in the skin, they are more prone. उसके बाद क्या आपकी स्किन जो है वो वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सबकी स्किन पे नॉर्मली मिलते हैं, लेकिन क्या वो ऑयल या जो आपकी बॉडी से जो सीबम निकल रहा है वो ऐसी कंडीशन में है कि वो क्या वो एक ऐसी कंडीशन में है कि वो उस बैक्टीरिया को ओवरग्रो करने करने दे रहा है आपकी स्किन पे, और वो बैक्टीरिया अगर ओवरग्रो हो रहा है तो क्या वो आपके स्किन के ऊपर ही रह रहा है या उन पोर्स में भी जा रहा है, उन पोर्स को ब्लॉक कर रहा है। तो जिन लोगों में ये दोनों तीनों फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें एक्ने होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। दे आर मोर प्रोन टू डेवलपिंग एक्ने। ऑब्वियसली हॉर्मोन्स का इन्फ्लुएंस जरूर होता है, बट द मोस्ट कॉमन एज इन विच पीपल डेवलप एक्ने इज फ्रॉम द टीन एज to the age of 30 to 35, be it males or be it females. And that is the age at around which the normal, post-pregnancy, the hormonal level, it stabilizes and there are not many ups and downs. Uh, People can also continue to get acne post 35, in which case they may be adult acne or adult onset acne, जिनको शुरू ही 35 की एज के बाद होते हैं, जिसमें ज्यादा रोल हॉर्मोन्स का या हमारे सीरम इंसुलिन लेवल्स का होता है। तो ये सिर्फ एक स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। एक्ने आपके अंदर की बॉडी में जो हॉर्मोन्स का लेवल चल रहा है, आपकी बॉडी में अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको भी दर्शा सकते हैं। Okay. And we always say prevention is better than cure. Is there a way to prevent acne breakouts? You cannot, as I said, you cannot prevent the breakout of an acne. What you can do is prevent the complications that come from it. That is, having a face full of acne, having acne which gets swollen to nodules, having pus discharge from the acne, having prominent scarring which is left behind. So uske liye kuch factors hain. That is, you first of all, the most important is you get an acne. I am not a big fan of home remedies. Go consult a dermatologist, get a skincare regimen that suits you, and follow it religiously. What is the dermatologist going to do? If you're using a sunscreen, he's going to give you a sunscreen that is for your skin type. If you're using a face wash, he's going to give you a face wash that is for your skin type. He's probably going to give you a night cream and maybe a moisturizer. So this is something that people already use. He's just going to give you something that suits your skin better. Along with that, maybe some oral medicines which prevent the breakout of acne and which decrease the inflammation on the skin. So this is how, I mean, do not create any delay if you're getting acne. Go consult a dermatologist, get a skincare regimen, and discipline is very important in anything. So you follow that regimen in a disciplined manner, and there's a good chance that you won't develop any kind of pigmentation or scarring. I think the biggest mistake we do is whenever we see, acne breakouts, we'll first run inside the kitchen or towards our kitchen garden. तो हमको एलोवेरा से लेके नीम पेस्ट, किचन में टर्मरिक, जो मिलता है सब लगा लेते हैं। बाय द टाइम वी रियलाइज कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, इनफैक्ट स्कार्स हो गए हैं या चीजें और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, that's when we end up going to the डॉक्टर। एक और प्रॉब्लम है डॉक्टर कि हमारे को जब एक्ने होता है तो हम किचन के बाद सेकंड हमारा जो एक स्टॉप है वो होता है केमिस्ट शॉप, और ओवर द काउंटर हम केमिस्ट से पूछ के कि कोई क्रीम दे दीजिए, एक्ने हो रहा है, वो लगा लेते हैं। तो आपने ऑलरेडी कहा होम रेमेडीज आप प्रेफर नहीं करते हैं या एडवाइस नहीं करते हैं, यू आर नॉट अ बिग फैन ऑफ होम रेमेडीज, तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? सेकंड, ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट, स्पेशली केमिस्ट से पूछ के कोई क्रीम लगा लेना, ये कितना अच्छा या कितना बुरा प्रैक्टिस है? जिस तरीके से कोई भी कॉस्मेटिक आप यूज करते हैं, कई बार वो आपकी स्किन को सूट नहीं करता। इसी तरीके से कई सारी होम रेमेडीज हैं जो आपके ऊपर बैकफायर कर सकती हैं। आपने कोई चीज का, अब आपको ये पता है कि आपको एक पर्टिकुलर कोई स्पाइस या कोई ऐसी चीज है जो आपको अपनी स्किन पे लगानी है, उससे एक्ने सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो आप चीज यूज कर रहे हैं, क्या वो उतनी प्योर है? क्या आप उसको सही कॉन्सेंट्रेशन में यूज कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात, क्या वो आपकी स्किन को सूट करेगी? तो आपको नहीं पता। तो इसलिए होम रेमेडीज को अपने आप मत यूज करिए, क्योंकि आपका एक्ने बर्स्ट हो जाएगा, वहां पे स्कारिंग रह जाएगी, वहां पे पिगमेंटेशन रह जाएगी। उसके बाद एक डर्मेटोलॉजिस्ट को उसको ठीक करने के लिए 4 से 6 महीने का समय चाहिए। उतना पेशेंस आमतौर पे लोगों में होता नहीं है। दूसरी चीज जो आपने कही कि लोग ओवर द काउंटर मेडिकेशन यूज करते हैं। अब देखिए, एक्ने की जो मेडिकेशन आती हैं वो 10 प्रकार की हैं, और हर मरीज को एक ही प्रकार की मेडिकेशन नहीं लिखी जाती। उसका स्किन टाइप असेस किया जाता है,
देखा जाता है कि उसका वर्क रूटीन कैसा है, वो किस मेडिसिन को टॉलरेट कर पाएगा, जिस तरीके की उसको एक्ने एक्ने भी 4 प्रकार के होते हैं, ग्रेड 1 2 3 4। तो उसका जो ग्रेड ऑफ एक्ने है उसको कौन सी मेडिसिन ज्यादा बेटर ट्रीट करेगी, अलॉन्ग विद दैट उसको ओरल मेडिकेशन की जरूरत है या नहीं है, और तीसरी सबसे जरूरी बात पेशेंट की काउंसलिंग। क्योंकि एक्ने अगर 18 साल का कोई लड़का आपके पास आ रहा है, उसके एक्ने 18 साल की उम्र में खत्म होने वाले नहीं है, उसके साथ 25 26 साल तक की उम्र तक रहेंगे। तो आपको उसको काउंसिल करना है, और इस तरीके से काउंसिल करना है कि वो डीमोटिवेट होकर हार नहीं मान ले। आपको सिर्फ उसकी स्किन नहीं ठीक करनी, बीइंग अ डॉक्टर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू गिव हिम अ गुड आउटकम, you boost his confidence and also improve his quality of life. So that is why consulting a doctor who's trained in treating all of this is a good option in my view. डेफिनेटली, और आपने बहुत अच्छी बात भी कही कि ये सिर्फ पेशेंट के एक्ने ट्रीट करने तक ही लिमिटेड नहीं है, ये उनके मेंटल कंडीशनिंग का भी एक इम्पोर्टेंट उसमें हिस्सा होता है, क्योंकि उस एक्ने के साथ उनको बहुत 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 सालों तक रहना है। तो किस Exactly. तरह से हम मेंटली प्रिपेयर रहे कि एक्ने होंगे और क्या हमें करना है। लेकिन सबसे जरूरी बात हमारे व्यूअर्स के लिए कि एक्ने दिखे चेहरे पे तो प्लीज गो एंड कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। ऑनलाइन सर्फ अगर आप कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, होम रेमेडीज क्या है, दवाइयां क्या है, तो प्लीज वो ना करते हुए ये सर्फ कीजिए कि आपके आसपास अच्छे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट कौन है, उनके पास जाइए और अपनी प्रॉब्लम दिखाइए। एंड नाउ डॉक्टर वुड लाइक टू टॉक अबाउट ऑल द ट्रीटमेंट ऑप्शंस दैट आर available for treating acne, and what do you recommend for acne? The most basic being our topic, that's sunscreen. Sunscreen is a very integral part in treating acne. Along with that, there are many components which decrease the comedone, which is the basic unit of an acne. So there are many anti comedone treatments, or comedolytic gels and creams which are available, which a dermatologist will evaluate. And along with that, a short course of oral antibiotics, or even antibiotics to apply on your skin. And there's one more thing. People think that in an acne prone skin they must not use a moisturizer. But I like to separate the two out. You're getting acne and you have oil, that is oil, and a moisturizer will hydrate your skin, that is a form of water. So both of them are completely different things. An oily skin does need a moisturizer. उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक्ने के अंदर आपके जो स्किन का बैरियर है वो टूट जाता है, उसके अंदर एक डिफेक्ट आ जाता है। उस बैरियर को मेंटेन करने के लिए, उस बैरियर को रिपेयर करने के लिए एक्ने स्किन के लिए जो मॉइस्चराइजर्स आते हैं वो बहुत जरूरी है। Okay. And as you said, sunscreen is also very important, but many people again say that, while by using sunscreen on their acne prone skin, they're actually making their skin more oily or patchy or more acne prone. So how would you like to address these questions? As I said, depending on your skin type, a dermatologist chooses a sunscreen for you. Now, there is no one size fits all. हो सकता है कि आपको एक बार किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने कोई सनस्क्रीन लिखी हो, वो आपको सूट ना करे, कोई बात नहीं। आप जाइए उनके पास दोबारा, तो उनसे बात करिए कि डॉक्टर नहीं सूट कर रही है सनस्क्रीन। वो आपको कोई और सनस्क्रीन लिखेंगे जो शायद आपकी स्किन को और बेटर सूट कर जाए। अगर आप ओवर द काउंटर किसी को सनस्क्रीन लेनी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, सनस्क्रीन हाइपो एलर्जेनिक होनी चाहिए, सनस्क्रीन नॉन कोमेडोजेनिक होनी चाहिए, सनस्क्रीन ऑयल फ्री होनी चाहिए। अगर पैराबेन फ्री है और सल्फेट फ्री है तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं है तो भी चलेगा। लेकिन सनस्क्रीन पे नॉन कोमेडोजेनिक लिखा होना सबसे ज्यादा जरूरी है उन लोगों के लिए जो जिनको एक्ने है, वो सनस्क्रीन उनको सूट करने का चांस ज्यादा होता है। Okay. And again, as we were saying that, there are spray sunscreen, cream-based sunscreen, gel, lotion, etc., various formulations of sunscreen. Now, which one is the better, especially for an acne-prone skin, doctor? For an acne-prone skin, gel-based or aqua gel-based sunscreens are the best, in my opinion. But we can also shift to sunscreens which are lotion-based or cream-based in the winters. क्योंकि समर्स में आपका स्किन अलग तरीके से रिएक्ट करता है, विंटर्स में आपका स्किन अलग तरीके से रिएक्ट करता है। So depending on the weather, these are the two picks that I have. Okay. And doctor, we have many viewers who are pouring in their questions, so I'll pick them one by one. Shubhi Mehto हमारे साथ हैं, पूछ रही हैं, is there foods or other things I should do or use that will lessen acne?
यस, फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल बहुत है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि फूड से एक्ने आपके कम हो जाएंगे, लेकिन आपको अपनी स्किन की जो ओवरऑल हेल्थ है वो जरूर आपको बेटर लगने लगेगी। सम ऑफ द फूड्स दैट यू कैन यूज दैट, which I'm a big fan of, are green salads, tomatoes. Drink lots and lots of water. Water, our body is 70% water. तो हमारी स्किन में हाइड्रेशन रहता है, that is all water. Water is responsible for washing out all the toxins from our body. So drink water, eat green salad whenever you can, and tomatoes are a good option if you're not allergic to them in any way. Okay. Doctor, is there any dietary precaution or do's and don'ts? I mean, do you have already, stated, but any don'ts? क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पीना है, ऐसा भी कुछ है? संयुक्त, मुझसे एक चीज आपको बताना रह गई। विटामिन जी. सी containing foods, lemons and oranges, they are also good addition. अगर किसी को एक्ने प्रोन स्किन है या किसी को स्किन इश्यूज हैं और अगर वो अपने डाइट को कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो विटामिन सी कंटेनिंग फूड्स आर समथिंग दैट दे शुड हैव। अब क्या नहीं खाना है? ऑब्वियसली ज्यादा ऑयली फूड्स आपको अवॉइड करने हैं। मार्केट में स्पाइसेस या फूड्स विच कंटेन कलरेंट्स, वो आपको अवॉइड करने हैं। इसके अलावा एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि मिल्क से होता है या नहीं होता। काफी स्टडीज कहती हैं कि होता है, काफी स्टडीज कहती हैं कि नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि आपको मिल्क से हो रहा है, इट इज बेटर टू स्टॉप इट। इट इज बेटर टू स्विच टू समथिंग लाइक कर्ड rather than milk to maintain your intake of calcium, but not go to an extent कि वो आपको acne cause कर दे। ओके. सो और ये जितना भी फ्रूट एंड सिट्रस फ्रूट्स डॉक्टर बोल रहे हैं, ये खाना है, इंटेक करना है, कंज्यूम करना है, मुंह पर मत लगाइए, एंड उसे एग्जैक्टली, इंक्लूड अपने डाइट एग्जैक्टली, में कीजिए, ये ज्यादा जरूरी है. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। Okay, let's move on to Rajat Saxena is here asking, how do FDA sunscreen guidelines affect my sunscreen? FDA sunscreen guidelines. Well, the FDA sunscreen guidelines are mostly for the US. The formulations in US are different from what they are in India. Our skin type is very different from what it is in the Caucasian race that is there in America. Sunscreens that you buy in India must be suitable for the Indian skin type, must be approved if there is this lack in our, we do lack a certain regulating body in our country which will approve all the sunscreens per se. For drugs we do have it, but sunscreens are on a thin line. Some people consider them to be in cosmetics, some consider them to be as a drug, as a treatment option. So there is no clear cut guideline as to what we're supposed to be following. But yeah, I would definitely say that if sunscreen is, as I said, oil free, is paraben free, is non-comedogenic, is hypoallergenic, is fragrance free, and is formulated by a decent company, then that is a good option. And SPF 30 or above in India, because एक और बहुत बड़ी बात है, यूएस के अंदर मेलेनोमा या स्किन कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज्यादा होता है। उनकी जो रेस है वो स्किन कैंसर, वो उन गाइडलाइंस पे बनी, उनके जो एसपीएफ की यूजेज है, उनकी जो पीए रेटिंग की यूजेज है, वहां पे वो सनस्क्रीन अप्रूव्ड हैं जिनका मेलेनोमा के प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा रोल होता है या सनबर्न के प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा रोल होता है। इंडिया में सनबर्न का इंसिडेंस कम है, इंडिया में मेलेनोमा का इंसिडेंस बहुत कम है, रादर पिगमेंटेशन का इंसिडेंस ज्यादा है। तो इंडिया में जो सनस्क्रीन्स हैं वो ज्यादा ऐसी हैं जो पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करें। स्पेशली आजकल सनस्क्रीन हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन सी और विटामिन ई होते हैं, तो आप उनके लिए भी जा सकते हैं। Okay. Sameer Singh पूछ रहे हैं, since I lead a very busy life, I need to keep my routine really simple, and what is the absolute basics? I'm sure he's asking about skincare routine. The absolute basic is wash your face with a gentle cleanser. Use a sunscreen whether you're indoors or you're outdoors. And depending on your age group, consult a dermatologist and get a night care regimen for yourself, because before going to sleep, you must be having 10 minutes at least to give to your skin. Apart from that, the foods that I mentioned, have plenty of salad, have plenty of citrus fruits, drink a lot of water. These are some things that can be incorporated even into a busy lifestyle. That'll give you a healthy looking skin. Okay, and this question reminds me, doctor, many people, especially those who have oily or acne-prone skin, they go and keep on washing their, face as often as they can. Many a times in 2 or 3 hours, they'll go and wash it with a cleanser. Again, how would you like to address that? What's the right thing to do?
Washing the face every 2 or 3 hours is not the solution. Rather, you should use a face wash and a moisturizer that controls the oil production in your skin. You wash your face in the morning, apply an oil controlling moisturizer so your face does not get that oil. Then you wash your face again at night, and you use a face wash. There are face washes for specifically for oily skins and for skins which are acne prone. There are face washes which contain AHAs, BHAs, and they're formulated in a way that they wash out only the excessive oil and not dry out the skin. So it's better to use them along with an oil control moisturizer and not wash the face again and again, because you're exposing your skin to an element and you're washing away the natural barrier. Right. Archana Chauhan, a very interesting question. Can I use the sunscreen I bought last summer, or do I need to purchase a new bottle each year? Does it lose its strength? I mean, basically, does the sunscreen comes with an expiry date? Yes, expiry date is mentioned on almost all the sunscreens that are being sold in India. So your sunscreen should be within the expiry date. Secondly, the storage conditions. आपका जब last summer गया या जब आपने sunscreen को लगाना छोड़ा, तो आपने उसको कैसी condition में रख दिया? Ideally, any skin product that you use should be kept at a temperature below 30 degrees. तो अगर आपने अपने सनस्क्रीन को एक डार्क प्लेस में रखा है जहाँ टेम्परेचर यूजली 30 डिग्रीज नहीं एक्सीड करता, और आपकी सनस्क्रीन जो है वो एक्सपायरी पीरियड के अंदर अंदर आती है, बिल्कुल उसको अगले साल भी यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी अर्चना कि आपकी सनस्क्रीन अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई है? अगर आपने लगाना शुरू किया था तो चूंकि रोज लगाना है, सिर्फ समर्स में नहीं, थ्रू आउट द ईयर लगाना है, तो आपकी सनस्क्रीन अभी तक खत्म हो जानी चाहिए थी। तो ऑल्सो पे अटेंशन कि आप सनस्क्रीन कितना यूज कर रहे हैं। एंड इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल डॉक्टर, अभी मॉनसून है, बहुत सारी जगह है जहाँ बारिश हो रही है, सूरज दिखते ही नहीं है बहुत दिनों तक, एंड लोगों को लगता है कि अब सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, अब सीधे फिर जब सूरज देवता के दर्शन होंगे तभी लगाएंगे। What's the right thing to do? As I said, you need to apply sunscreen even if you're indoors. And when you're going outdoors, definitely you are not able to see the sun, but there is light, right? So that means the sun rays are reaching the earth. Through the clouds, they're reaching the earth. So you need to apply a sunscreen, even in monsoons, be it even winters, जब हमें लगता है कि नहीं sun rays नहीं आ रही उतनी, sun rays हमेशा आती हैं जब भी दिन होता है, तो आपको sunscreen यूज करना है, चाहे आप अंदर हो चाहे आप बाहर हो। Okay. Namita Arora पूछ रही है, I have a very acne prone skin. How should you treat our skin without completely drying out, especially during the monsoon? As I said, you use face wash, you use a face wash and you use a moisturizer that is for oil control, that will not rip your skin of its natural moisture, that will not dehydrate your skin. There are formulations which are available which specifically act on the acne and on the oil product on the oil being produced in the skin to reduce its production, to normalize it. And then you use a moisturizer which is there for acne prone skin, so that will not dry your skin out. It will just wash off the excessive oil. It will decrease the oil production till the time you're using that particular face wash and lead to a decrease in the breakout of acne. Right. Shekhar Mishra पूछ रहे हैं, which areas of the body should you pay more attention to? I think ये sunscreen से related इनका question है, मुझे थोड़ा incomplete question लग रहा है, that is, which regard, but अगर sunscreen से related है, या डॉक्टर किस तरह से आप इस question को address करना चाहेंगे? मुझे भी ऐसे ही लगता है, सनस्क्रीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, हमारी जो फेस की स्किन होती है, दैट इज रिलेटिवली सेंसिटिव व्हेन वी कंपेयर इट टू आवर बॉडी का स्किन। आइडियली one should use sunscreen for all the sun exposed areas, for your hands, for your forearms, if you're wearing an open footwear, then even for your feet. But the basic is the face and the neck are a must. They are a must. Then the second priority is any other sun exposed area that is there. Okay, तो फेस, नेक, बिहाइंड द नेक, ये तो है ही, और इसके अलावा जो भी आपके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स जो है एक्सपोज्ड है सन में, उनको भी हमको सनस्क्रीन से कवर करना है। एंड व्हाट एल्स शुड वी नो अबाउट सनस्क्रीन डॉक्टर? एनीथिंग दैट वी मिस्ड आउट, और व्हाट एल्स कैन वी डू टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द सन? आपने बताया कि हम अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए एक अच्छा डाइट ले सकते हैं, क्या सन से बचने के लिए भी कोई तरीका है जो हम कर सकते हैं, बाय ईटिंग गुड और बाय maintaining a good whatever lifestyle? Is there anything that we can do apart from using sunscreen? बिल्कुल, a very simple thing is you can carry an umbrella whenever you're outdoors. Whenever you're going outdoors, अगर आपको, जैसे बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास आती हैं जो अपने बच्चों को स्कूल में
उनका रूटीन है कि सर हम 2 बार घर से बाहर निकलते हैं, एक बार सुबह बस स्टॉप तक छोड़ने जाते हैं बच्चे को, एक बार दोपहर को लेने जाते हैं बच्चे को बस स्टॉप से, और बस स्टॉप 10 मिनट दूर है। मैं सनस्क्रीन लगा के भी जाती हूँ तो पूरा वो स्वेट से वाइप आउट हो जाता है। कहते हैं आप सनस्क्रीन लगाइए एंड यू कैरी एन अम्ब्रेला, आप धूप से तो बचेंगे, आपका पिगमेंटेशन भी नहीं होगा, आपका सनस्क्रीन भी वाइप आउट नहीं होगा, कोई आपको बुरा असर ऐसा नहीं आने वाला सन एक्सपोजर का। अब काफी लोग ये बोलेंगे कि सन एक्सपोजर विटामिन डी के लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, आप अपने फेस पे ना लीजिए डायरेक्टली सन को, आप कुछ समय के लिए अपने बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज कर सकते हैं सन को, एंड यू कैन गेट योर डोज ऑफ विटामिन डी। राइट। सुमन पूछ रहे हैं, बच्चों से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि मेरा बेबी है एंड हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माय बेबी और टॉडलर फ्रॉम दी सन। बेस्ट इज फिजिकल स्किन प्रोटेक्शन। आप उसको फुल स्लीव क्लोथिंग पहनाइए, आप उसको जहां भी लेके जाएं उसको, मतलब अगर बच्चा कवर्ड रह सकता है वो सबसे अच्छी बात है। नहीं तो देयर आर सनस्क्रीन विच कैन बी यूज्ड इन चिल्ड्रन हु आर 6 मंथ्स एंड अबव, तो आप वो सनस्क्रीन अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, और आपको एक अप्रोप्रिएट सनस्क्रीन बताएंगे जो आपका बच्चा जो 6 महीने से ऊपर का है वो यूज कर सकता है। तो अपने बच्चे को वो सनस्क्रीन लगा के स्कूल भेज सकते हैं, वो खेलने जा सकता है, सब कुछ कर सकता है। राइट। हम सब जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं वहां बहुत ह्यूमिडिटी है, कई पार्ट्स में बहुत गर्मी रहती है एंड वी ऑल अंडरस्टैंड दी। अगर हम भले ही ये ना समझ पाए कि इंडोर्स के लिए भी सन जरूरी है या वो सिर्फ सन से हमें नहीं बचाता है सनस्क्रीन, वो हमें दूसरे तरह के सभी हार्मफुल रेज से बचाता है। हम पूरे टाइम आजकल अपने मोबाइल के सामने होते हैं, लैपटॉप के सामने होते हैं, घर के अंदर बहुत सारी लाइट्स होती है, सब हमारे स्किन के लिए इक्वली हार्मफुल है। अगर इतना भी डीप में ना जाए तो भी बहुत बेसिक है कि सनस्क्रीन तो लगाना ही है अगर आप इंडिया जैसी कंट्री में है। बट स्टिल एज आई सेड इन द बिगिनिंग 67% ऑफ पीपल आर स्टिल नॉट यूजिंग सनस्क्रीन। सो एंड आई एम श्योर हमारे भी जो बहुत सारे व्यूअर्स इस टाइम हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं डॉक्टर, वो भी शायद अभी तक सनस्क्रीन लगाना उन्होंने शुरू नहीं किया या फिर सिर्फ समर्स में लगाते हैं कि धूप में जा रहे हैं तो लगा ले। किस तरह से आप उन्हें समझाना चाहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू टेल? मैंने जैसा संयुक्त बताया कि ये कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार जो है वो एक लैक ऑफ काउंसलिंग है। हम कई बार लोगों से बात करते हैं सनस्क्रीन के लिए, तो वो हमें ये तो बता देते हैं कि सनस्क्रीन कैसे लगानी है, कौन सी लगानी है, लेकिन उसको लगाना जरूरी क्यों है, वो कई बार उसमें एक जो कम्युनिकेशन गैप है वो रह जाता है। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि सनस्क्रीन आपको सिर्फ धूप से प्रोटेक्ट नहीं करते। जो आजकल सनस्क्रीन हैं वो आपको अंदर की स्पॉटलाइट से, आपके फोन की जो हार्मफुल ब्लू ब्लू लाइट है उससे तक प्रोटेक्ट करते हैं। ये ब्लू लाइट जो है, ये कई बार जो स्पॉटलाइट्स हैं ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं पिगमेंटेशन के लिए और आपके एक्ने ब्रेकआउट के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पे कहीं अनइवन पिगमेंटेशन ना आए, या अगर वो है तो वो कम रहे, उतना ही रुका हुआ रहे, आप चाहते हैं कि आपका एक्ने ब्रेकआउट एकदम से ना बढ़े, तो आपकी स्किन टाइप को सूट करने वाला एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन आप जरूर यूज करें। अगर आप बाहर जाते हैं, अगर आपका आउटडोर एक्सपोजर है, आप एंटी पोल्यूशन सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, आप वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। अंदर बाहर दोनों जगह सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट ही करेगा। 99.99% स्पीकिंग, अगर आप सनस्क्रीन के किसी कंपोनेंट से एलर्जिक नहीं है, इट विल डू यू मोर गुड देन हार्म, सो इट इज बेटर टू यूज इट, बीट समर्स बीट विंटर्स, क्योंकि विंटर्स में भी आप अंदर बैठे हुए हैं, आप हीटर के पास बैठे हुए हैं, हैलोजन की लाइट आती है, आप स्पॉटलाइट, हमारा इंडोर एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता बीट विंटर्स, इनफैक्ट लाइट शायद ज्यादा ही जलती है विंटर्स के अंदर जब धूप कम होती है। तो आपको विंटर्स में और समर्स में सनस्क्रीन जरूर यूज करना है। हाँ, अब अपना सनस्क्रीन का जो टाइप है वो मौसम के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। कंसल्टिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, अगर आपको विंटर्स में आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, आप ऐसा सनस्क्रीन ले सकते हैं जिसके अंदर मॉइस्चराइजर मिक्स हो। आपको समर्स में स्वेट ज्यादा आता है, आप एक मैट फिनिश सनस्क्रीन ले सकते हैं तो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा शाइनी नहीं दिखाएगा। Right. And same goes with acne, doctor. Many times people, as we have already discussed, कि acne होता है तो सबसे पहले हम किचन की तरफ भागते हैं, होम रेमेडीज की तरफ भागते हैं, किचन गार्डन की तरफ भागते हैं। वो भी नहीं हुआ तो फ्रेंड से पूछते हैं, उसको हुआ था तो उसने क्या किया था, उसका प्रेस्क्रिप्शन लेके केमिस्ट के पास भागते हैं, और कुछ नहीं हुआ तो केमिस्ट वाले भैया ही हमारे क्लास, वो होते हैं कि बता दो क्या लगाते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास हम सबसे आखिरी में जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हम सबसे आखिरी में पहुंचते हैं। ऐसे में ट्रीट करना एक्ने को कितना मुश्किल हो जाता है। मतलब कंपेयर अगर हम करें कि हम एक्ने हुआ तब पहुंचे और सब कुछ करके फिर डॉक्टर के पास पहुंचे, कितनी देर हम कर बैठते हैं, क्या कुछ गलती, क्या कुछ कितनी मुश्किल हो सकता है ट्रीटमेंट? ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कोई पेशेंट 2 दिन जब होम रेमेडीज काम नहीं करती तो तीसरे दिन आ जाता है, और कई पेशेंट्स 2 साल होम रेमेडीज
एक्ने जो उनके काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनको पेन और इचिंग होने लगती है, अपने फ्रेंड्स के प्रिस्क्रिप्शन ट्राई करके तब आते हैं। तो एक्ने को ट्रीट करना कितना आसान तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक पेशेंट का आउटकम जो है वो कितना बेटर हो सकता है। पेशेंट जितना हमारे पास जल्दी आता है, उतना आउटकम उसका बेटर होता है, उतना हमें उसको ओरल मेडिकेशन कम टाइम के लिए देनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा समय तक दवाइयां ना खानी पड़े, तो उसका एक तरीका ये है कि आप जल्दी चले जाइए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर पेशेंट जो जल्दी आ जाएगा डॉक्टर के पास, उसे ओरल मेडिकेशन 2 महीने में बंद हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स अगेन कि आपका स्किन टाइप कैसा है। लेकिन जो आपके फ्रेंड का प्रिस्क्रिप्शन है वो उसके स्किन टाइप को देखकर लिखा गया है, उसके टाइप ऑफ एक्ने को देखकर लिखा गया है। आपका टाइप ऑफ एक्ने, आपका स्किन टाइप आपके फ्रेंड से बिल्कुल अलग हो सकता है। तो आपका ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल अलग हो सकता है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जितनी जल्दी जा सके आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और उनसे प्रॉपर काउंसलिंग लें। आप उनसे पूछें जितने आपके मन में सवाल है, आपको अपने डॉक्टर से अपनी कंसल्टेशन में पूछ लेने चाहिए कि क्या ये 5 दिन में, कई बार डॉक्टर्स कभी बिजी होते हैं, उनके पास देयर ऑल्सो समटाइम्स ओवरवर्क, उनके पास बर्डन होता है। आप अगर उनके पास इतने क्लियर कट डायग्नोसिस लेके जा रहे हैं, उनको कई बार लगता है कि आपने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन आप अपने डॉक्टर से सवाल जरूर पूछें। जो आपके मन में सवाल है आप उसको जरूर पूछें, और उसमें सबसे जरूरी ये सवाल है कि आप पूछें कि मेरा एक्ने जो है वो कितने समय चलने वाला है। उसका रीजन ये है कि आपके डॉक्टर को पता है कि आपका एक्ने किस रीजन की वजह से हो रहा है। तो वो आपको एक प्रॉपर काउंसल और प्रॉपर गाइड कर सकता है कि आपका एक्ने क्या कोर्स लेगा, वो कितने समय ज्यादा रहेगा, किस वजह से बढ़ सकता है, किस वजह से कम हो सकता है, क्या आपको अवॉइड करना है, किस तरीके का लाइफस्टाइल आपको फॉलो करना है। इसके लिए आपको बेस्ट बताने के लिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही है। Well, good. And doctor, as we are, about to sum up the whole session, we are moving towards the conclusion part of the session. Any takeaway note for our viewers? As I've been repeatedly saying, do not treat yourself. Do not use a web search engine to diagnose and treat. Your doctor has an MD. The search engine does not. Your doctor has given it 9 years of his life to study about a particular thing. So your doctor knows better. Go to a qualified doctor who's a dermatologist and get your skin worries taken care of. Secondly, most importantly, always wear a sunscreen. Never, never, never leave a sunscreen. And it is skincare is not a sprint; it is a marathon. So you have to have a lot of discipline. You need to be patient to see the results. You do not need to, you should not give up if something is not working out. There's a solution to almost everything in this world. So go consult your dermatologist, find out a solution, and follow a regimen. That's it. Right. As I say, Rome was not built in a day. So you need to make small, consistent efforts every day. You need to have a disciplined skin regimen under the supervision of a dermatologist. Your skin will be much better than what you took to him or her. That was wonderful, Dr. Prateek Nagrani. It was wonderful talking to you. Thank you so very much, sir, for your valuable time and for this session. Thank you so much. We really look forward for many more such sessions in our coming times for our viewers. Thank you. Thank you. And viewers, thank you. Stay connected to our beautiful Spotless Skin page. Thank you. Have a great day ahead. Goodbye.